Hello everyone, welcome to the channel. On my previous video, I talked about our hypoglossal nerve. So if you have not seen that video, then click on the I button and watch the video now. And I already ended the one part of peripheral nervous system. So from today, I'm going to talk about another part of peripheral nervous system, which is स्पाइनल नर्व्स। मेरा मतलब यह है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दो हिस्सा है, एक क्रेनियल नर्व्स, दूसरा स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जितने सारे हैं वो सब मैंने सब खत्म कर चुका हूँ, ठीक है। तो आज से हम बात करेंगे स्पाइनल नर्व्स के बारे में। तो स्पाइनल नर्व्स के बारे में बात करने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी जानना पड़ेगा, जो मैंने पिछले वाले स्पाइनल कॉर्ड के वीडियो में सब बता दिया था, ठीक है। व्हाट आई मीन इज, ऑन माय अर्लियर वीडियो ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आई टॉक्ड अबाउट द डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, हाउ इट लुक्स, व्हाट इज द लेंथ, what are the parts of spinal cord, what is the inside, I mean gray matter, white matter, ascending tracts, descending tracts, function of spinal cord, everything. So spinal cord is the continuation part of brainstem. When this brainstem leaves cranial cavity via foramen magnum, suddenly the name changes into spinal cord. That's it. And this spinal cord extends from our cervical part to up to our coccyx. Okay. I mean, in between it has cervical part, thoracic part, lumbar part, then sacral part, and then coccyx or coccygeal part. Okay, so these are the ultimate segments of spinal cord. Where the spinal cord lies in between the vertebral foramen. Okay, मतलब ये जो vertebra होता है, रीढ़ की हड्डी है, गर्दन में कुछ है, फिर हमारे पीठ में कुछ है, कमर में कुछ है, कमर के नीचे में कुछ है, और लास्ट वाला जो कॉक्सिस है। तो ये जो इतने सारे हड्डी है, बात कर चुका हूँ पुराने वीडियो में, तो इतने सारे हड्डियों के बीच बीच में एक बड़ा गड्ढा रहता है, मतलब बड़ा छेद रहता है, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। तो इसी फोरामेन में रहता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व फाइबर्स निकल रहा है राइट साइड, मतलब दाएं दिक में, बाएं साइड में, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, तो सारे के सारे जो नर्व फाइबर्स निकल, इसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। मान लो ये है मेरा स्पाइनल कॉर्ड, इसको बीच में से कचेंग काट दिया। काटने के बाद जो फोटो आपको ऊपर से दिख रहा है, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड का कटा हुआ हिस्सा, ठीक है, जिसको आप ऊपर से देख रहे हो। अब क्या बोला था मैंने पुराने वाले वीडियो में कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसका जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बाहर वाला जो सफेद एरिया दिख रहे हो या थोड़ा व्हाइटिश एरिया, इसको हम कहते हैं व्हाइट मैटर, और अंदर में जो ग्रे कलर का देख रहे हो, इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। आई मीन द आउटर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज द व्हाइट मैटर एंड द इनर ग्रे पार्ट इज ग्रे मैटर, because this gray matter consists of lots and lots of neuroglia, okay, also few neurons, and entire white fiber consists of only axons. That's why we call it white matter, no gray matter. Okay, so what is the difference between this gray matter and white matter of spinal cord from our brain? Now in our brain, gray matter consists outside and the white matter consists inside, okay. And in the spinal cord, just opposite, gray matter consists inside and the white matter consists outside, ठीक है। तो इसी फोटो का जो आप स्पाइनल कॉर्ड का जो कट सेक्शन देख रहे हो, इसका सामने वाला हिस्से को हम कहते हैं एंटीरियर पार्ट। अब एंटीरियर को हम एक और नाम से बोलते हैं वेंट्रल पार्ट। तो ये है स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर या फिर वेंट्रल वाला हिस्सा, और जो पीछे जो आपका सींग जैसा दिख रहा है, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट या फिर पोस्टीरियर हॉर्न या फिर डॉर्सल हॉर्न। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर है, इसका दो हिस्सा, एक सामने वाला एंटीरियर हॉर्न या फिर वेंट्रल हॉर्न, और पीछे वाला पोस्टीरियर हॉर्न या फिर डॉर्सल हॉर्न। अब हमारा जो ये थोरासिक सेगमेंट है, ठीक है, थोरासिक वर्टिब्रा के बीच में ये जो साइड है, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों के बीच में कभी कभी एक लैटरल हॉर्न भी दिखता है, ठीक है। इनसाइड ऑफ दिस स्पाइनल कॉर्ड, gray matter and white matter also interconnects with each other, because this gray matter consists of few motor neurons and few sensory neurons, and also this white matter consists of sensory and motor neurons together. Okay, now as you can see in this photo that one fiber is coming from the ventral horn, one fiber is coming from the dorsal horn, both merges together and forms one spinal nerve. In the ventral side there are motor fibers, and in the dorsal side there are sensory fibers. Okay, one spinal nerve contains of both motor and sensory fibers. Okay, that's the ultimate idea. Again, in this 3D structure of spinal cord cut section, you can see these multiple fibers are coming from ventral side and dorsal side and merges together to form one single spinal neuron. Okay, now this motor part and sensory part I need to talk very elaborately. Okay, we call the motor fibers as efferent fibers,
and the sensory fibers are afferent fibers. Okay, suppose this is a spinal nerve. Okay, and I cut the one spinal nerve, and under microscope I can see this one spinal nerve contains of multiple fibers of general somatic efferent fibers, multiple fibers of general somatic afferent fibers, multiple fibers of general visceral efferent fibers, and multiple fibers of general visceral afferent fibers. This is our occipital bone. Okay, and below the occipital bone there is our first cervical vertebra, which is atlas. Below the atlas there is second cervical vertebra, which is axis, and below this third, then fourth, then fifth, then sixth, then seventh. Now listen to me very carefully. I am saying there is 7 cervical vertebra only, but in this chart there is 8 cervical spinal nerves. How? If there is 7 cervical vertebra, then there should be 7 spinal nerve. Why from this extra 1 spinal nerve is coming on? See, this is our occipital bone, as you can see in this photo also. This is our occipital bone, and below the occipital bone there is there is first cervical vertebra, which is atlas, and below this and below to the atlas there comes second cervical vertebra, which is axis, and below the third, then fourth, then fifth, then sixth, then seventh. There is one button. Suppose this button is one cervical vertebra, and above there is another button. This is another cervical vertebra, but in between these 2 cervical vertebra there is gap. Now from this gap, one spinal nerve going right side, another spinal nerve going left side. The gap between atlas and axis, I mean first cervical vertebra and second cervical vertebra, there is a gap. From this gap one spinal nerve going out, and this should be C1. Okay, and the gap between axis and the gap between second and third cervical vertebra, there is another spinal nerve coming out. It should be C2, and so on. There should be third, fourth, sixth, seventh spinal nerve. Okay, coming out from each the gap of between 2 adjacent vertebrae. But here is one catch. How? I said below the occipital bone there is atlas. So naturally there is a gap between occipital bone and atlas. मतलब ये जो occipital हड्डी है इसके नीचे और एटलस के बीच में जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसके दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप है. और मैंने कहा दिया था कि ऑक्सिपिटल हड्डी में भी जो एक बड़ा छेद है जिसको हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम, इधर से ही आपका स्पाइनल कॉर्ड का यात्रा शुरू होता है. ठीक है. नाउ द स्पाइनल कॉर्ड इज स्टार्टिंग बिलो टू द फोरामेन मैग्नम and the foramen magnum is in occipital bone, and there is gap between occipital bone and first cervical vertebra. So in between this gap another nerve fiber arises, and this nerve fiber going left side and right side, and this section is known as C1. Okay, the gap between occipital bone and first cervical vertebra, from in between this gap first cervical spinal nerve arises, and the gap between first and second cervical vertebra C2 nerve fibers arises. The gap between C3 and C4 cervical vertebra C3 nerve fibers arises, and so on 4, 6, 7, 8. I mean the gap between thoracic 1, I mean T1, and C7, I mean 7th cervical vertebra, the gap between in these two vertebra C8 nerve fibers arises. That's why in this chart there is 8 cervical spinal nerve, then 12 thoracic spinal nerve, then 5 lumbar, then 5 sacral, then 1 coccygeal spinal nerve. So total there is 31. Okay, मतलब हमारे गर्दन से लेकर शुरू करके हमारे कॉक्सिस तक पूरा एरिया में सिर्फ 31 जोड़ा स्पाइनल नर्व है. अब पेयर का मतलब हिंदी में क्या होता है मुझको नहीं पता, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे माफ कर देना. ठीक है. तो 31 जोड़ा होता है. ठीक है, जोरी होते हैं या जोड़ा जो भी बोलते हो. तो राइट साइड में भी 31, लेफ्ट साइड में भी 31. ठीक है. अब यही स्पाइनल नर्व दूर दूर में हमारे शरीर में फैलता है और पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है.
ठीक है. Few nerve fibers after coming out from the gap in between two adjacent vertebra. These nerve fibers connects with adjacent nerve fibers also, forms a local network. We call it plexus. So the plexus or the local network of nerve fibers present in the cervical area, we call it cervical plexus. Okay, the plexus or the local network present in our cervical area and thoracic area, in between area, we call it brachial plexus. Okay, the cervical, so the plexus or the local network present in our lumbar area, we call it lumbar plexus. So on sacral plexus, there is one interesting point that in our thoracic nerve fibers, I mean thoracic spinal nerve, there is no plexus. Why? Because each thoracic nerve enters in between gap of two rib cage. हर एक स्पाइनल नर्व जो thoracic सेगमेंट का है वो अलग अलग जो साथ साथ में जो पिंजरा है, ठीक है, रिब केज, रिब हड्डी, ठीक है, पिंजरे का हड्डी एक नंबर पहला हड्डी और दूसरे हड्डी के बीच में चला जाता है, तो इसलिए लोकल नेटवर्क फॉर्मेशन नहीं होता है हमारे थोरासिक रीजन में. ठीक है. हाउ दिस स्पाइनल नर्व कनेक्ट्स विद आवर एंटायर बॉडी, आई विल टॉक अबाउट इट इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन, बाय.